Yes. Let us see the MCQs from the circular motion. Perhaps this is the last lecture in this chapter. ये चैप्टर के अंदर जो MCQs है, तो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर के जो MCQs है वो हमारे सॉल्व करने बाकी है. तो हम आज वो कंप्लीट करके ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश करेंगे. और आपको ये भी पता होगा कि कल आपका इसी चैप्टर के ऊपर टेस्ट भी है. Let us start with the MCQs on uniform circular motion. Yes. See, we have done this up to, I think, here up to this 9th one, I think so, और 10th also. हाँ, 10th के लिए मैंने आपको बताया था कि अब देखो इसमें एक कंसेप्ट है, तो वो तुमको समझना है अच्छी तरह से. एक्चुअली देखो क्या है कि a car is traveling at 30 meter per second on the circular road of radius 300 meter, okay, and it is increasing its speed at the rate of 4 meter per second. Then the acceleration of the car is. ठीक है, तो इसका आंसर हमने लास्ट टाइम निकाला था, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है तो वो यूज करके हमने एक्सेलरेशन निकाला था, बिल्कुल. लेकिन how many of you know that in case of the circular motion there are two types of accelerations? See here, if suppose this is the circular motion, suppose this is the circular motion of a particle along the circle, then one acceleration is responsible for the turning of this particle. तो एक एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ होता है, जिसको ही हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है. बट एट द सेम टाइम द सेकंड एक्सेलरेशन इज देयर व्हिच इज अलोंग द टेंजेंट, which is increasing the speed of the particle continuously, and that is also called as the tangential acceleration. And since these two accelerations are just perpendicular to each other, the net acceleration will actually be the resultant of these two accelerations, which is going to be along the diagonal of the parallelogram formed by this AC and AT, and this is called as the resultant acceleration. Remember correctly, and that's why we can say that this resultant acceleration, if we denote it by A, then the magnitude of this A is actually going to be root of AC square plus AT square. So this is going to be actually the formula for finding the net acceleration in case of the circular motion, in which the centripetal acceleration is also there and the tangential acceleration is also there. Okay, तो जब tangential acceleration और centripetal acceleration दोनों होते हैं तो उनका net acceleration निकालना पड़ता है, जो कि इस फॉर्मूला से हमको मिलता है. अभी अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखो ठीक से इस क्वेश्चन के अंदर हमको बताया जा रहा है कि द कार इज ट्रेवलिंग at 30 meter per second on the circular road and its radius is 300 meter, correct है, and it is increasing its speed at the rate of 4 meter per second. What does this mean? This is itself the acceleration, but that is the tangential acceleration actually. Okay, so this is the tangential acceleration given here, 4 meter per second square, and the centripetal acceleration can be obtained from this 30 and 300 because its speed is 30 meter per second and radius is 300 meter per second. So we can easily get the acceleration by using this formula. Centripetal acceleration can be obtained by v square upon r, where v is going to be 30, so 30 का square upon 300, जो हमको मिलता है 900 upon 300, which comes out to be actually 3 meter per second square. But at the same time, the tangential acceleration is already given to be 4 meter per second square, right? So if we use this here in this formula, then we get this net acceleration is to be equal to centripetal acceleration का square, जो कि 3 है, तो 3 का square plus यहाँ पे आ जाएगा 4 का square. तो इससे हमको मिलेगा actually root of 9 plus 16, which is actually going to be equal to root of 25, which is nothing but 5 meter per second square. Okay, so this is actually going to be the tangent net acceleration, 5 meter per second square. Yes, correct, very good, Prashant.
ओके, तो ये इस टाइप का भी हमको करना पड़ता है। तो जबकि इसके अंदर हमको कैसे पता चला कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे देखो इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या कि स्पीड के बढ़ने का जो रेट है तो वो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, यस, चलो नेक्स्ट वन, ट्राई दिस नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल and its angular speed increases from 2 radian per seconds to 40 radian per seconds in 19 seconds. Okay, if the radius of circle is 20 centimeter, then the ratio of centripetal acceleration to the tangential acceleration is, okay, तो centripetal acceleration और tangential acceleration इन दोनों का रेशियो हमको ढूंढ के निकालना है। देखो ठीक से, सबसे पहली बात ये कि आपको ये 2 रेडियन पर सेकेंड्स और 40 रेडियन पर सेकेंड्स एंड 19 सेकेंड्स ये जो दिया हुआ है, इससे आपको अल्फा निकाल के लेना है। अल्फा, अल्फा मतलब द एंगुलर एक्सेलरेशन वी कैन से। yes, see here, alpha is given by the formula omega 2 minus omega 1 upon t. So omega t 2, how much this omega 2 is, see it here, the particle revolving in a circle, its angular speed increases from 2 radian per seconds to 40 radian per second in 19 seconds. Okay, तो ये ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा 2 हो गया, और ये टाइम 19 seconds हो गया। So just use this here. So 2 to 40 ना, तो 40 minus 2 upon 19, which happens to be 38 divided by 19, which is going to be 2 meter per second, 2 radian per second square, correct है? So this is going to be actually the alpha. Yes, alpha is found out. Yes, and radius of the circle is going to be 20 centimeter here. Yes, तो अब देखो, अगर ये सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर है और इस पार्टिकल का जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा 1, वो एक्चुअली कितना था, 2 रेडियन पर सेकेंड था, राइट? और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जब वो यहाँ पे पहुंचता है तो वहां पे उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, omega 2, it is given to be 40 radian per seconds. Okay, yes, and then we are going to find out this alpha to be 2 radian per second square, no doubt, and from this only we can find out the tangential acceleration. How can we get the tangential acceleration? Because we know that v is equal to r into omega, correct hai? So if we just differentiate this here, then we get this dv by dt is actually going to be equal to d by dt of r omega, correct hai? Where r is a constant, so it can be taken out, and what we are left with is simply r is constant out, and omega का derivative आएगा अंदर, तो d omega by dt, and this is going to be dv by dt. Here this dv by dt stands for tangential acceleration, and this d omega by dt here stands for the angular acceleration, and hence we can prove the relationship between this tangential acceleration and the angular acceleration, that is at is equal to r alpha. So using that we can get that at मतलब tangential acceleration is equal to r. अभी रेडियस कितना दिया है सर्कल का, देखो ठीक से एक बार, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.2 मीटर. So we can put this 0.2 here, and alpha is actually going to be 2 radian per second square as it is. So we have to replace it by that, so that we get this as tangential acceleration is to be found out as 0.4 meter per second square, no doubt. And at the same time, the centripetal acceleration can also be found out by using the formula r into omega square. Okay, r into omega square, where r is again going to be 0.2 here, and ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब यहाँ पे 40 रेडियन पर सेकेंड हमको लेना है, क्योंकि 19 सेकेंड के बाद का जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है उसका उसका उसके साथ हमको रेशियो निकालना है, तो इसलिए हमको ये ओमेगा 40 यूज करना पड़ेगा. तो ये 40 और उसका स्क्वायर जो बन रहा है 0.2 into 1600, which is going to be actually equal to 0.2 multiplied by 1600 कितना बनता है,
why we take r equal to 0.2? Actually, radius of the circle is given here to be 20 centimeter. Correct है? देखो यहाँ पे ठीक से. See here, this is the radius of circle which is given to be 20 centimeter. So 20 centimeter means 0.2 meter. You have to divide this 20 by 100 so as to convert it into meter, and hence we get it as 0.2 meter. Okay, so here it will be 160 multiplied by 2, which becomes 320 meter per second square. So this is the centripetal acceleration. And see, read carefully, what we want here is the ratio of the centripetal acceleration to the tangential acceleration. Yes. So what we want here is, we want to find out the ratio of centripetal acceleration to the tangential acceleration. AC upon AT हमको ढूंढ के निकालना है. What is AC here? See, we already get it as 320, and this is to be divided by this 80, which is 0.4, and hence we get this as 320 upon 0.4, which happens to be actually 3200 upon 4. If we remove this decimal point, and then it becomes 4 ones are 4, 8s are, and 0 0 as it is. So we get this ratio as 800:1, which is already there in the option A here. See carefully. So A is going to be actually the correct option. Yes. And this 13th one, I already have talked about this in last lecture. The work done by centripetal force when the body completes one revolution around the circle of this radius r is 0, because उसका reason भी मैंने last time बताया था कि in case of the circular motion, what happens is the displacement of the particle takes place along the tangent, right? And the force acting on the particle is going to be along the radius towards the center, that is the centripetal force. So at every point, the tangent and radius are perpendicular to each other, and since this angle is 90 degrees, so the dot product of this fs or fc into ds becomes actually 0 at every point, because they are perpendicular to each other. तो जो चीजें perpendicular होती है तो उनका dot product हमेशा 0 बनता है, and this dot product itself is called as actually the work done, and that's why the total work done during one complete revolution also by the particle by this centripetal force actually becomes 0. Okay, so work done in circular motion, uniform circular motion by the centripetal force is always 0. Remember correctly. Yes. Now see here, the next question, that is the body of mass m is revolving in horizontal circle of radius r. If the centripetal force is F, then the kinetic energy of the body is going to be. Yes. Now just take this question on the yes, see here, we'll try to relate the centripetal force and kinetic energy. See here, the centripetal force is having the formula that is mv square upon r, correct? And on the other hand, if you see carefully, the kinetic energy is having the formula that is half mv square, correct? Isn't this mv square is common in both of these formulas, right? So using this fact, we can just relate these two things, that is fc and k. See how? So from this formula, we can get that mv square is actually going to be r into fc, correct है? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ हमको इसमें से भी mv square का वैल्यू मिलता है जो होता है 2 times of k.
And now if we equate this value of mv square from both of these formulae, then we can get that r into fc is going to be 2k, so that we can express this fc in terms of k as 2k by r, and even we can express this k also in terms of fc as 2 times of, sorry, r times of fc upon 2. That's it. Just read this question once again. Now, yes, see here, a body of mass m is revolving, moving in a horizontal circle of radius r. If its centripetal force is f, then the kinetic energy of the body is equal to, तो kinetic energy हमको निकालना है, करेक्ट है? अभी अभी हमने क्या देखा? अभी अभी हमने देखा kinetic energy of the body is always equal to r times fc upon 2, correct है? So if we use it here, then we can easily get that r times fc, ये देखो rf upon 2. This will actually be the correct option. Yes. चलो next one, 16th one, right here. A certain string breaks under 45 kilogram weight. A mass of 0.1 kilogram is attached to this string of length 5 meter and whirled in a horizontal circle. The maximum number of revolutions per second without breaking the string is. See here, there is a concept. देखो, अगर सपोज एक पार्टिकल है हमारे पास और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरह से, और ये स्ट्रिंग को यूज करके वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. Yes. Then what happens here is, as the number of rotations goes on increasing here, the centrifugal force will be acting on this particle in the outward direction, which is called as Fc, denoted by Fc, which is actually going to be mr omega square. Correct है? ये उसका formula है. But this centrifugal force is balanced by the tension in this string, which is directed inwards, which is denoted by T here. And we can see at every point what happens is this tension is exactly equal to this mr omega square. जितना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज्यादा टेंशन, बिल्कुल. बट एक होता है ऐसा कि अगर सपोज ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बढ़ता चला जाए, ये बढ़ता ही चला जाए, तो उस केस में टेंशन भी बढ़ेगा जरूर. बट अभी चलो ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाने के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन टेंशन को बढ़ने के लिए तो लिमिट है ना, क्योंकि आखिर वो स्ट्रिंग है, कभी ना कभी टूटने वाला है. तो जब ये स्ट्रिंग टूटेगा तो उसके लिए उस स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए एक टेंशन रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग टेंशन. ठीक है, उसको बीटी से हम डिनोट करेंगे. एंड व्हेनेवर दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्टोन हियर exactly becomes equal to this breaking tension, at that time the string will be revolving with the maximum number of rotations. तो उस समय ये स्ट्रिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशंस कर रहा होगा, और उसी समय ये स्ट्रिंग बिना ब्रेक किए, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर विच द स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक. If the centrifugal force increases slightly beyond this value, then the string will surely break. And that's why if you want to find out the number of revolutions, maximum number of revolutions with which the stone can be revolved in horizontal circle without breaking the string, then we have to equate this breaking tension in the string with this centrifugal force here. Okay, so let us try to solve this question here. Yes. तो अभी देखो यहाँ पे ये जो है certain string breaks under 45 किलोग्राम weight. What does this mean? इसका मतलब ये होता है कि इस स्ट्रिंग के ऊपर अगर 45 किलोग्राम वेट, इतना अगर वेट हम डाल देंगे तो वो ब्रेक हो जाता है. ये उसका मतलब है, याद रखो ठीक से. When the string is supported with the weight of 45 किलोग्राम, means suppose एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग हमने, यस, ये स्ट्रिंग सपोज इस तरह से रखा हुआ है और इसके ऊपर अगर हमने एक वेट रखा हुआ है इस तरह से, तो इस वेट का अगर मास अगर 45 किलोग्राम है तो उस फोर्स की वजह से ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाता है. ये दिया हुआ है. अभी सोचो अगर ये स्ट्रिंग 45 किलोग्राम की वजह से ब्रेक होता है, सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द ब्रेकिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग हियर? सो ब्रेकिंग टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल एक्चुअली बी इक्वल टू
m into g, समझ सकते हो ठीक से, mg। तो m कितना है यहाँ पे 45 किलोग्राम, and that is to be multiplied with g which is 9.8 here, which can be taken as 10 also, but चलो ठीक है, अगर 10 भी ले लेंगे तो भी कितना आएगा 450 के आसपास आ जाएगा। ओके, तो 9.8 भी अगर लेंगे तो चलो ठीक है, वट इट मे बी, वी कैन कंसिडर दिस इन न्यूटन which is called as a breaking tension in the string. Okay, now we'll see 0.1 kilogram weight is attached to the to this string of length 5 meter। तो मतलब इसी स्ट्रिंग का 5 मीटर लेके हमने क्या किया, एक 0.1 किलोग्राम का एक वेट उसके साथ अटैच कर दिया और उसको घुमा दिया इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर। ये देखो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर घूम रहा है। ये देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर ये उसको घुमा दिया। यस, सो इन दिस केस वी कैन सी क्लियरली, तो ये मास कितना है, स्मॉल m वी कैन कॉल इट एज 0.1 किलोग्राम। यस, and what will be the force acting on this mass in the outward direction due to the centrifugal force, that will be denoted by Fc, which is actually going to be mr omega square। And what is the radius of this circle, same as the length of this string which is given to be 5 meter here। okay, तो ये 5 मीटर जो है वो उसका लेंथ बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो इसलिए फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा, तो देखो m के बदले आएगा 0.1 इंटू रेडियस r के बदले आएगा 5 एंड ओमेगा, ओमेगा के बदले हमको क्या रखना है, ये देखो हमको निकालना क्या है, देखो ठीक से, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। व्हाट डज इट मीन, वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब हमको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, बराबर है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ये फॉर्मूला एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो अगर हम ये डाल देंगे इसके अंदर तो यहाँ पे हमको मिलेगा ओमेगा के बदले डाल दिया 2 पाई एन एंड उसका स्क्वायर, करेक्ट है। सो दैट वी कैन गेट दिस सिंप्लीफाइड एज 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर pi square as it is, and here it is n square kept as it is। and now we can just solve this further। अभी देखो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशंस हमको तब मिल सकेंगे जब हम ये ब्रेकिंग टेंशन को इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ इक्वेट करेंगे, करेक्ट है। so we have to equate this breaking tension with centrifugal force। so if we just equate centrifugal force Fc with the breaking tension, then we can just get this as 0.5 into 4 pi square into n square must be equal to this breaking tension, which is already we have found it out as 45 into 9.8, correct है। and as we know that this pi square, अभी देखो pi का वैल्यू कितना होता है, pi का वैल्यू होता है 3.14, करेक्ट है। तो pi स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, वो होता है 9.86, remember। so now this pi square and this g here, g मतलब 9.8, तो ये दोनों जो वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल है कि नहीं, ऑलमोस्ट सेम इक्वल बराबर है। तो इसलिए ये पाई स्क्वायर का वैल्यू और इस तरफ 9.8 जो g का वैल्यू है तो वो कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे आगे। अच्छा, और ये 0.5 और ये 4 जो है वो मिलके 2 बन जाएंगे, तो ये 2n square actually becomes equal to 45, and this gives that n square is actually going to be equal to 45 by 2, correct है। so what is this 45 by 2, it actually becomes 22.5, correct है। and the square root of 22.5, how much it must be, so since n is going to be 22, n square is going to be 22.5, we can conclude that n must be the square root of this 22.5, which is simply, just check,
n will actually be equal to root of 22.5. अभी हमको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, बराबर, और 16 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, 4 बनता है। तो जरूर 22.5 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 और 5 के बीच में आएगा कि नहीं। So we can take it approximately as 4.8 or 4.6. After all, we already having the options here. तो options के अंदर हमको दिख रहा है कि 4.72 can be selected as a correct option just because it is very close to that. Because what we are getting here is simply 4 point something. Okay, 4 point something हमको मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे 22.5 का स्क्वायर रूट हमको मिल रहा है, बराबर। अभी 22.5 का स्क्वायर रूट हमको भले एक्यूरेट निकालने नहीं आता है, फिर भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी 4 point something, just because since this 22.5 lies between 16 and 25, the square root of this 22.5 must lie between 4 and 5. So we can conclude that this square root of this 22.5 must be 4 point something. So already options के अंदर हमको पता चल रहा है कि 4.72 should be the correct option, because 470 तो हो नहीं सकता, 47.2 भी तो हो नहीं सकता, और ये तो वही हो गया 47.2, वो भी हो नहीं सकता। तो इसलिए एक ही चीज हो सकती है, वो है ये 4.72, which is going to be actually the correct option. समझा ठीक से? Yes, चलो next one. Just try, let us try this. Question on the right side here. See, a certain string breaks under. अच्छा, फिर से वही आ गया क्या? Okay, 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 ठीक है। Yes, see this question. If a flyover bridge is concave instead of being convex. देखो यहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज कैसे रहता है पता है तुमको? फ्लाईओवर ब्रिज हमेशा ऐसा होता है, बराबर, और यहाँ से ऊपर से गाड़ी दौड़ता है इस तरह से। But they are saying that the flyover bridge, if it is concave instead of being convex, ठीक है? Yes, प्रशांत। कॉन्वेक्स जो फ्लाईओवर ब्रिज है ये ऐसा होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ओके, इफ इट इज कॉन्केव, तो कॉन्केव का मतलब हुआ ऐसा होगा वो, बराबर है। तो इसका मतलब अगर व्हीकल इस तरह से नीचे जा रहा है, इस तरफ अगर v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है आगे, तो ऐसे हालत में क्या होगा, इट विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, इट विल परफॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सर्कल लाइक दिस। एक सर्कल का ही पार्ट वो कंसिडर करेगा, परफॉर्म करेगा, बट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल विल बी above the vehicle here at this point here somewhere. So in that case, the forces acting on this vehicle, as we have just talked last time, will be one is the gravitational force, which is downwards, and at the same time there will be a centrifugal force Fc, which is going to be downwards, and both of these forces are getting balanced by the third force, which is going to be upwards, which is nothing but the normal reaction provided by the surface. So the thrust on the road surface, that is we have to find out. So that thrust, that is normal reaction in this case, will actually be equal to Fc plus mg. ये हम समझ सकते हैं आराम से। So we can say that this mg plus Fc will be the thrust, and if we try to solve this further, तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन अगर करेंगे आगे, क्योंकि हमको पता है Fc का वैल्यू कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है, तो इसलिए यहाँ पे n इज इक्वल टू mg plus fc के बदले क्या आने वाला है, mv square upon r. That is going to be present here in this option A here, which is going to be the correct one. Okay, yes, chalo next one. See this question in the right side. An object of mass 50 kilogram is moving in a horizontal circle of radius 8 meter. If the centripetal force is 40 Newton, then the kinetic energy of the object is, see here, mass is given, radius is given, and centripetal force is also given. Centripetal force का formula क्या है, mv square upon r, and we want to find out the
kinetic energy of the particle. See here, kinetic energy आपको निकालना है. What is the relationship between kinetic energy and centripetal force? See, kinetic energy happens to be half mv square. Isn't this mv square is present here? So from this formula, we can calculate the value of mv square as r into fc, correct hai? And if we put this value of mv square here, then we get this kinetic energy to be simply half into r into fc, correct hai? So kinetic energy becomes equal to half into r into fc. Now r is what? It is 8 meter. So we can just replace it here, so as to get, yes, r is going to be 8. And what about fc? It is already given to be 40 newton, right? So just replace it here and just reduce this by 2. So 2 ones are 2 fours are, and hence we get 4 into 40, that is 160 joule. So 160 joule is actually going to be the kinetic energy of this particle, which is already there in this option D. Okay. Yes, just try this next one here. A cyclist moves in a circular track of radius 0.5 meter. ओके, एक साइक्लिस्ट है जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव होता है 0.5 मीटर रेडियस के. If the coefficient of friction is 0.4, then the maximum velocity with which the cyclist can take a turn without leaning inwards is. So see, whenever a cyclist takes a turn, suppose this is the turn. ये सपोज टर्न है, ठीक है, और साइक्लिस्ट जो है तो वो इसके ऊपर है सपोज, तो यहाँ पे वो साइक्लिस्ट टर्न ले रहा है, ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज साइक्लिस्ट हैज टू लीन इनवर्ड्स व्हाइल टेकिंग द टर्न. उसको अंदर की तरफ झुकना पड़ता है. अगर उसको झुकना नहीं है तो उसके लिए उसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम FC बोल देंगे, that will be balanced by the frictional force acting on it, which is suppose FS. And as we have seen that in case of the properties of solids, mechanical properties of solids, the frictional force is actually given by the formula mu into mg. If you remember, this is the formula for frictional force, where mu is called as the coefficient of friction, no doubt. And FC, that is the centrifugal force, is actually given by the same formula, that is mv square upon r, right? So if we just equate these two here, इन दोनों फॉर्मूलेस को अगर हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड के साथ वो तभी जा सकेगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसलिए अगर Fs या Fc इज इक्वल टू Fs अगर करेंगे, तो इससे हमको मिलेगा mv square upon r is going to be equal to mu a times mg. So that this m just gets cancelled from both sides, and if we take this r in that side, then we can just be able to write this as v square equal to mu r g, and v actually becomes equal to root of mu r g, and hence we can get this simplified here. So we have to just simplify values डाल दो सभी and get the answer finally. So see here, what is given here is 50 meter radius and coefficient of friction is 0.4, करेक्ट है. तो देखो ये रेडियस दिया है 50 मीटर एंड 0.4 रेडियस, सॉरी 0.4 म्यू के बदले डाल दिया, और आर के बदले 50 मीटर डाल दिया, और जी के बदले 10 ले लो, ठीक है. सो वी कैन जस्ट सॉल्व दिस फर्दर एंड गेट दिस सिंप्लीफाइड एज 0.4 into 50 कितना हुआ. Yes, or just take this G as 9.8 only, just because
स्क्वायर रूट फाइंड करना इजी हो जाएगा उससे. Yes, this is 9.8 here. So 4 5 are 20. 20 multiplied by 9.8, which is nothing but 9.98 into 2, which is going to be 196, right? And root of 196 happens to be 14 meter per second, which is actually going to be here the velocity. Yes, very good. So this 14 meter per second is going to be actually the correct option. Yes. See this last one. The maximum safe speed of a vehicle on the circular track is 15 km per hour. When the track becomes wet, the maximum safe speed becomes 10 km per hour. Then the ratio of coefficient of friction of dry track and wet track is. See, ये फॉर्मूला जो हमने अभी अभी यहाँ पे डेवलप किया for this safe speed here. This is the value of safe speed for the track in terms of the coefficient of friction. So if we use this formula twice, then when the track is dry, we can call it as a VD. Velocity at the dry track is going to be VD, which has to be equal to root of mu D into RG, where mu D is going to be the coefficient of dry track, coefficient of friction of dry track. And at the same time, weight के लिए अगर यही formula use करते हैं, तो हमको मिलेगा VW is equal to mu W into RG, where mu W is nothing but the coefficient of friction of the wet track. If we take the ratio of this equation number 1 and equation number 2, then we can get simplified as VD upon VW. यही तो yes, coefficient of friction of dry track to wet track we want to find out. तो यहाँ पे हमको वही मिलने वाला है, क्योंकि अगर ये रेशियो लेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा म्यू डी इंटू आर जी एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा सिंपली म्यू डब्ल्यू इंटू आर जी. करेक्ट है. जिसमें अगर स्क्वायर रूट को अगर हम कंबाइन करते हैं तो देखो यहाँ पे वी डी अपॉन वी डब्ल्यू केप्ट एज इट इज एंड स्क्वायर रूट इज कंबाइंड, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू डी इंटू आर जी अपॉन म्यू डब्ल्यू इंटू आर जी. So that this RG gets cancelled actually, and if we square both sides, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो देखो यहाँ पे so it will be VD upon VW का स्क्वायर is equal to mu D upon mu W. करेक्ट है. And if we replace this VD, the velocity of velocity of the vehicle in the dry track, which is already given to be 15 km per hour, and the speed at the wet track, it is going to be 10 km per hour. Forget about the units, they are going to be the same. So keep them in the same units, because after all we have to take the ratio. तो कन्वर्ट भी करेंगे तभी भी वो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल ही हो जाएगा. सो क्यों कन्वर्ट करने का, तो उसमें यहाँ पे आएगा 15 अपॉन 10 और उसका भी स्क्वायर, एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली द रेशियो ऑफ म्यू डी टू mu w, and hence it is becomes 15 5 3s are and 5 2s are, so we get this as 3 by 2, and 3 by 2 का स्क्वायर क्या बनता है, तो वो बनता है 9 by 4. okay, yes, so mu d upon mu w is actually going to be 9 by 4. So this is going to be the ratio which is present there in option A. okay, yes. बाकी कुछ ओरल क्वेश्चंस भी है. देखो जैसे टॉर्क प्रोड्यूस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन रेडियस r is 0. टॉर्क विल बी 0 बिकॉज अभी चलो ठीक है, टॉर्क का कांसेप्ट तुमको अभी पता नहीं है, forget about that. एंड बैंकिंग के भी जो क्वेश्चंस है तो वो तुमको एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, वो 12th में है आपको बैंकिंग और ये सारे जो क्वेश्चंस है ना 29th आगे के. हाँ बाकी ये है देखो, द सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ नहीं नहीं ये भी नहीं है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के भी नहीं है.
So forget about all the questions after these 30. They are not in your syllabus actually. You have to do them in 12th actually. तो 12th में उनका आंसर सॉल्यूशन या उस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो तुमको 12th में करने होंगे. ठीक है, अभी फिलहाल ये 30 तक सफिशिएंट है. Okay, so let us stop here and we declare that this chapter has been finished.